माय नेक्स्ट गेस्ट, इनसे मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं, और सरदार यासिर इलियास खान, यंगस्टर, हमारे स्टैंडर्ड से तो यंगस्टर ही हैं, लेकिन माशाल्लाह ही हैज़ एन अकम्प्लिश्ड कैरियर ऑलरेडी, जो ये काम कर चुके हैं। और मेरे ख्याल से आप जो इस्लामाबाद के लोग हैं उनको सेंटोरस की शक्ल में ये क्या खूबसूरत आइकॉनिक बिल्डिंग दिखाई, और मेरे ख्याल से मुश्किलें ज़रूर आई होंगी, वो थोड़ा बहुत अगर बताना चाहें वो बताएंगे। फिर मूव एंड पिक और पाकिस्तान में इस खूबसूरत सक्सेस स्टोरी को, और ये आप लोगों ने ये बात सही की कि हम लोग सारे जो है ना वो सक्सेस को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है वो बहुत कम लोगों को नज़र आती है। जिस तरह मैं बात करता हूँ कि हमारी जो लिस्टेड कंपनियां हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता चलूँ आपको कि जब स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन हो रही थी तो लोग फसाड देखते हैं कि यार इतनी लैंड, इतनी बिल्डिंग, इतना सब कुछ, जो एसेट होता है फिजिकल वो नज़र आता है, तो उसको अगर बेचती है गवर्नमेंट तो लोग कहते हैं वो हमारा फैमिली सिल्वर बेच दिया, पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि वो एसेट फाइनेंस कैसे हुआ है, क्या वो प्रॉफिट से बना है, क्या वो लोन से बना है, और क्या ओवर द इयर्स इस अर्निंग एसेट या फिजिकल या रियल एसेट से लोगों ने, जो मैनेजमेंट है उसकी, उसने कमा के इस बिल्डिंग को फ्री करा भी लिया है कि ये बैंकों को इसके ऊपर पैसा ही देना है। तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो मेरा 2-3 सवाल हैं आपसे, और क्योंकि आखिर में एक मेरा कराची से एक और दोस्त है, उनकी बस जाना है, बट आई हैव एम्पल टाइम फॉर यू एंड फॉर हिम एंड अदर्स कि ये जो सेंटोरस की आपके जहन में कैसे आया, और एक आप जो हैट पहनते हैं टूरिज्म का, इन जुलाई ओनली कपल ऑफ वीक्स बैक आपको एक टूरिज्म की एक्सरसाइज दी गई, ऑनरी आपको बनाया गया कोऑर्डिनेटर, उस वाली चीज़ को विद योर एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस विद सेंटोरस एंड मूव एंड पिक, आप इसको कैसे आगे लेके जाएंगे। और इसी में आप अगर ऐड करना चाहें तो आप यू हैव हेल्ड पोजीशंस एट द इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी आप प्रेसिडेंट रहे। सो रियल एस्टेट को, टूरिज्म को, और इस होटलिंग और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को, ये बहुत सारे लोग हैं जो इनमें से इस लाइन पे आना चाहें, आपको कैसे ये लाइन लगी, और आगे क्या, व्हाट इज इट दैट दिस सेक्टर इज गोइंग टू ऑफर टू न्यू कमर्स? A very good afternoon and assalamu alaikum to everyone. I think जैसे एक मुहावरा है, the sky is the limit. It's simple as that. Opportunities हमेशा होती हैं. It's up to you कि आप कौन से pick and choose करते हैं which suits you best. उस वक्त जो 2005-6 का टाइम था, Centaurus was the most ideal property being auctioned alongside with Grand Hyatt का जो plot था, Constitution 1 Avenue, and we bid it for both. We bid it for both the plots, and unfortunately Constitution Avenue नहीं हो सका. Second plot was Centaurus. We bought the plot and it was at the time the most expensive plot auctioned in the history of Pakistan. We were very proud of it. I think it was the right investment at the right time, and despite the challenges, उस वक्त ज़लज़ला भी हुआ, we didn't give up. उसको हमने design किया with the best architects you could find, and we designed something which is till date considered as an icon क्योंकि उसकी complexity बहुत ज़्यादा है. It's not just the design, it's the fact that there's a lot of components centrally integrated into one complex, one property. So there's apartments, there's offices, there's a hotel, there's mall, all as one, overlapping services, facilities, parking, security, everything. So it's very complex. So I'm very proud of it that we designed, conceived, and then built something which is representing Pakistan on a global scale. और मुझे बेहद फ़ख्र है कि लोग recognize करते हैं, बाकी entities recognize करती हैं, चाहे बाहर के developers हैं वो भी recognize करते हैं. जब अल्लाह सबको इस हादसे से बचाए, जब आग लगी थी, so you all remember this was being shown on BBC, CNN. I mean, the world media showed that one of the mega complexes in Pakistan caught fire. And again, because of the standards जो हमने set किए थे, fire compliance के, fire rating के, we had a lot of in-house systems. Fire rated तो वैसे भी थे, लेकिन we had sprinklers, we had backup gensets, backup pumps. I mean, everything that could come into play. And then we had the whole of Islamabad. My entire city, which I call my family, stood with us. We had people calling and saying, what do you need? People sending water bowsers. So look, I'm very proud of it. I'm proud of all the other developers that are here. When we talk about opportunity in 2021, when I became the president of Islamabad Chamber, we were talking about real estate back then, giving it the recognition of an industry, and we did. We announced a construction package in line with the government, and Naya Pakistan was working on affordable housing. We had a very good deal. And then subsequently, we had issues as well. We had issues with the imports
LCs were closed because of our IMF liabilities, and that was a challenge I had to face representing the chamber, business community, and a developer. I'm doing a 5-star, 6-star hotel, and I'm not allowed to import equipment. So then after I dealt with all the issues, being the president of Islamabad Chamber, from trade issues to the commerce issues, it was protection and promotion at the same time. We were doing a lot of trade fairs, and at the same time we were lobbying with CDA ke dukane band na karwaएं, encroachment logon ko na tabah karein. I mean, we need to legalize things. We always have to find an alternative. And we did it. We convinced CDA, and CDA no longer at my tenure closed any of the businesses. We were able to legalize the businesses. F6, F7 का एक मराकज़ की अगर हमने कहा कि 20-21 करोड़ दे के जो एक रेस्टोरेंट बना हुआ है छत पे उसको ना तबाह करें, उसको लीगलाइज कर दें, कन्वर्जन चार्जेस ले लें उनसे. That was a logic, basic common sense. And digitization has always been at my forefront. I've always said digitize, and that will get rid of everything, especially corruption. So we work very closely with DVC as well. जो design writing committee meetings थी, मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे वहाँ पे थे. I was representing the business community, so we had to protect ourselves. कि ना इनसे पूछें कि sunlight आ रही है नहीं आ रही है. This is not your prerogative. Your prerogative is to see the design compliance, which the building code is following, and he's following it. So any capacity, any form that you can represent your own, you must do it. And I've done this since college days. I mean, in university, I was the honor and student council representative. So I've always done it. Advocate. मेरी आदत है कि कुछ मेरे सामने गलत हो तो I raise my voice. With the opportunity that came with the Honorable Prime Minister of Pakistan, I had a candid discussion with him. I requested कि sir, we don't have tourism industry in Pakistan. हमने उसको industry का दर्जा नहीं दिया. So he was very kind. He said, why don't you try this? I said, absolutely, it would be my pleasure. And it's another battle that I've taken on, and I'm more than happy to fight it. Look, I recommend all of you that are here to diversify into tourism. हमारे दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे रेडिसन को represent कर रहे हैं. ये पंगा मैंने बहुत पहले लिया था. जब हमने 6-star होटल बनाया तो उस वक्त मैंने ले लिया था. लेने के बाद, करने के बाद मैं tourism को represent कर रहा हूँ ताकि people that I know personally are doing this don't face the same issues that I faced. That's the bottom line. And we create an avenue. मैं जो tax की आपने बात की, मैं wait कर रहा था for my opportunity to talk about it because it correlates with what I'm doing. अगर total Pakistan की liability की बात की जाए, defense production is going to contribute a lot as well, because now Pakistan has that global recognition, and obviously we know who we are. हम सिर्फ बनाना नहीं जानते, हम चलाना भी जानते हैं. That is the difference. That's what the world is recognized now. As far as the secrecy is concerned, it's no longer secret. NASTAP में आप जाएं, आप drones देख रहे होंगे हमारे वहाँ पे सामने बन रहे हैं. So with regards to the tourism side, the problem is we owe 120 billion to IMF, 120, 130 billion. Your tourism sector alone can contribute 30 to 40 billion dollars annually. 3-4 साल में आप offset कर सकते हैं. अब debt servicing cost में 50% of your budget is given. मेरा एक ये सवाल है, जो हम बात करते हैं penalty की, हम भी दे रहे हैं, being taxpayers. वो penalty हम कब तक देंगे? उसका हल क्या है? जहाँ साहब, जितने non-filers हैं, we ensure that they become filers. Become whistleblowers, guys. क्या वो सारा ठेका हमने लिया हुआ है? For how long? अब super tax भी हम दे रहे हैं, because वो 9% या 8.5% जो वो नहीं दे रहे वो भी हम देंगे. So हमने इस sector को promote करना है, tourism को, because tourism has a lot of potential. Airbnb model can come up in Pakistan. We can start air safaris, and we're working on a lot of things. I'll be telling you about my tourism plans quickly. There's never been a national policy, so we're coming up with a national policy which is applicable to all. So we have a National Tourism Coordination Board. उसको हम revise करेंगे, सारी provinces का part बन जाएंगी, so no more debate कि हमें suit क्या करता है नहीं करता है. They're all part of it. We'll, as a united body, decide a policy for Pakistan. The image, मैं एक और चीज़ request करता हूँ आप सबसे, ये जो floods हैं, आग लगती है, कुछ भी होता है, हम, और मैं honorable chief से agree करता हूँ, कुछ भी हो यही होता है, forwarded as received. I don't forward stuff. I put a lot of my groups on silent. सब ग्रुप्स में होते हैं. Why? ये counterproductive है. मैं अपनी चीज़ें ज़रूर forward करता हूँ ग्रुप्स में. अगर मैंने कोई अच्छा काम किया हुआ तो forward करता हूँ, otherwise I keep it to myself. It's a waste of time, and also अब negativity फैला रहे हैं. Positivity को खींची है. ज़्यादा नासिर साहब से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता. The energy that he has, he transfers that energy, and that's what we're doing here, spreading positivity. तो आपके पास कुछ भी negative आता है, आप उसको ना share करें. Positive आता है, पूरी दुनिया में फैलाएं. All of us within our organization have 400, 500, 1,000, 2,000, 3,000 people. Make it compulsory that our own staff must spread something positive, not just regionally, globally. We all have friends and relatives abroad. That's important. Similarly, जो आपके sectors हैं यहाँ पे, देखें हर बंदे के पास कोई ना कोई घर है, उसको guest house बना दें. आपके पास AJK में, GB में potential है, जहाँ भी है, do it. If we don't do it, restaurants के business है, if we don't do it, ये sector कभी भी उस तरह से grow नहीं कर सकता, जो उसकी real potential है. आज पाकिस्तान में 40-50 million domestic travelers हैं.
آپ کے ٹورزم کے. کیا ان کے پاس آزاد کشمیر میں کوئی اکاموڈیشن ہے؟ جی میں تو بن رہی ہے, اے جے کے میں there is nothing. پنجاب کے اندر دیکھ لیں, ابھی آپ کے سکھ یاتری آ رہے ہیں, how many of them have proper accommodation? اب ہم جو کر رہے ہیں پالیسی, we're making travel easier for them. Already 126 countries are getting visa on arrival. ہم اپنے انڈین پاسپورٹ ہولڈرس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے ہم آسانی پیدا کر دیں گے. اگر 4 مہینے لگتے ہیں, ہم آپ کو 3 ہفتے میں کر دیں گے. Why? It's our need and we're not like them. اگر وہ ایشوز کریٹ کرتے ہیں, ہم نہیں, we're more civilized, more civic. We've proven to them, even for our media, prove to the world how different we are from them. ورنہ ہم بھی پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں, ہم نے کیا نہیں. So I think the sky is the limit. اور جہاں پہ بھی آپ کو جس پلیٹ فارم پہ بھی موقع ملتا ہے to represent Pakistan, be a Pakistani and help Pakistanis, we must. That's what I'm doing. That's what Federal Minister Saab is doing. We all do it. And we have to keep doing it. اگر یہاں پہ ہیں تو کریں, اگر یہاں نہیں ہیں تو ٹھیک ہے, آپ سے کسی کا کوئی شکوہ نہیں ہوگا, لیکن اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے, توفیق دی ہے, تو we owe it to this country. I understand their challenges, I understand their issues, I'm not being naive, لیکن اس کو فائٹ کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ IMF سے تب تک, جب تک آپ نہیں نکلیں گے تب تک آپ کو ریلیف نہیں ملے گا ٹیکس میں, کیونکہ جو نہیں دے رہا اس کا بھی آپ نے دینا ہے. تو حال یہی ہے کہ یو ہیو ٹو میک شیور کہ جتنے ہماری ٹریڈ باڈیز ہیں, ہماری جو انجمان تاجران ہیں, صدر کی دکانیں ہیں, صدر کراچی میں بھی ہیں, مجھے بتائیں انڈاکیومنٹڈ ویلتھ آج 410 بلین کا GDP ہم کہتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 600 بلین کا GDP ہمارا ڈکلیئرڈ نہیں ہے. ڈکلیئر کروائیں نا گائز, کیا سارا فرض ہم نے ادا کرنا ہے اس ملک کا؟ تو آپ کی روڈس کہاں سے بنیں گے, آپ کا انفراسٹرکچر کہاں سے بنے گا, اسکولس کہاں سے بنے گے؟ آج آپ اسلام آباد کے اسکولس دیکھ لیں, ماشاء اللہ فائنلی اپگریڈیشن آ رہی ہے, وی ہیو AI لیبس, ہم پروگرامنگ دے رہے ہیں, لیکن ایک ٹیم ہے جس کی ویژن ہے, لیکن ڈو دے ریئلی ہیو دا فنڈز؟ دے ڈونٹ. تو فنڈنگ کہاں سے آئے گی؟ ہم کیسے ڈیولپ کریں گے اپنے آپ کو؟ اب میں آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں, آئی ہیو چیلنجز ڈسپائٹ ریپرزینٹنگ دا PM آفس. مجھے بھی چیلنجز ہیں, آئی ہیو ایشوز ود پاور, یوٹیلیٹیز, گیس, لیکن میں اس ادارے کو بلیم کیسے کر سکتا ہوں, کہتا میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. تو ایٹ دی اینڈ میں نہیں اپنا خرچہ کرنا ہے, CSR بھی میں ہی کر رہا ہوں, اپنا شہر بھی میں چلا رہا ہوں, لیکن کب تک؟ اٹس ناٹ سسٹینیبل, رائٹ؟ کراچی کے سندھ کے حالات آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں, کب تک لوگ بارش میں اپنے اس میں سیوریج کے اس میں ڈوب رہے ہیں بکہ ڈھکن نہیں لگے ہوئے. ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں, گٹر کے ڈھکن نہیں لگا پا رہے, کس کی ذمہ داری ہے؟ سو گائز وی کی ناٹ, آئی مین ہم اپنے شہر کو ایک حد تک سپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن انڈیفینیٹلی نہیں ہو پائے گا. وی آل ہیو لمیٹیشنز اینڈ دی اونلی آلٹرنیٹیو is to make sure that everyone is contributing their share. یہ option نہیں ہے, like he said, it shouldn't be an option. It should be compulsory for those to pay tax that are not. If they don't, تو پھر be ready to pay 12% super tax. burden آپ پہ آئے گا. So it's up to us now. Thank you very much. آپ نے Just to conclude, have faith in Pakistan. پاکستان یہ بھی نہیں کہہ رہا کہیں نہیں جا رہا, پاکستان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ابھی 10 مئی کے انسیڈنٹ میں ہم نے ثابت کر دیا کہ وہ مور دین کیپیبل. پوری 25 کروڑ کی افواج, میں سے 6 لاکھ کی بات نہیں کر رہا, 25 کروڑ کی بات کر رہا ہوں. بات نیت کی ہوتی ہے, ول کی ہوتی ہے. where there is will there is a way. So ہم کسی لحاظ سے کم نہیں ہیں. The world respects us now. All we have to do is sell ourselves. We're going to Tajikistan, we're going to Uzbekistan, we're going to London to do multiple trade fairs for tourism. ہم نے پروموٹ نہیں کیا ٹورزم کا ابھی تک, ہم پروموٹ کرنے والے ہیں. ازبیکستان کی پوری فلائٹ خالی آ رہی ہے یہاں پہ, ہم نے ازبیک کے ٹورسٹ کو یہاں پہ لانا ہے. ہم یورپ میں جاتے ہیں, پروموٹ نہیں کرتے پاکستان کو. وی ہیو ٹو پروموٹ. ایک میں چیز اور لا رہا ہوں اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے. وی آر گیونگ اسٹیٹ لیول پراپرٹیز ٹو یو گائز ناؤ. آئی ایم گونا گیو یو ایوری تھنگ دیٹ فیڈرل گورنمنٹ ہیز. ایک F9 پارک میں ہم تھیم پارک کی جگہ لا رہے ہیں, فوڈ اسٹریٹ کی جگہ لا رہے ہیں. We're working on GB, AJK, give you everything that is state owned. You come in as a partner, as a JV. We're not expecting you to buy anything, because I wouldn't buy. I want something on lease for 20, 30, 40, 50 years. اور یہی چیز ہم represent کرنی ہے to the world, that Pakistan is open for partnerships. That's the best way forward. It's the most economical model. Thank you. Thank you.